जयधारी माँ। हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। जयधारी माँ। जय माता। आज हमारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आइए जुड़िए, आइए जुड़िए। Guneet Monga Kapoor is going to join us today. Vinik, I heard a wonderful quote. It said, "Whosoever has given their very best, given their all to life, has never regretted." She's given her all to life. We are celebrating her journey of resilience, hard work, not giving up no matter what, and faith. Let's see a video on her and then meet her.
जय धारी माँ गुनीत, जय जय गुरु जी। Can you hear? हाँ जी, Guneet, can you आवाज hear us? Switch on your mic. Your mic is off. वी आर वेटिंग, कोई बात नहीं। जी, आप जुड़े रहिए, विल जस्ट रिकनेक्ट। Hello. जी, Hi, Guneet. जय जय गुरु जी गुनीत। I जय don't know गुरु। how I was put out of the stream, so I'm here now. कोई बात नहीं। आई गेस there's a right time for everything. Yes, of course. There's a right moment. जी, गुनीत, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मम्मी, मैं शुरू करती हूँ जी। What जी, was it like, Thank you for गुनीत the जी? beautiful presentation and for having me here. जी, थैंक यू जी, वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको। मैं शुरू Thank you. करती हूँ जी। जी, जी, you know, there are moments in life when the journey is only between you and the Almighty, and the magic happens in those moments because there's a journey where nobody is watching it. It's invisible, it's quiet. What was that journey like? I think it's a journey of protection. It's a journey of love, of abundance. कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस करवाया जाता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एक पाथ पे चल रहे हैं जो कोई है जो देख रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है। So I think my spiritual side, which is with Gurbani, I'm a Sardharni, and वो कहते हैं मिला हुआ मिलवा सकता है। तो कहीं ना कहीं following Guruji and being in touch with Gurbani, I feel very blessed to meet an energy that has chosen me as a disciple. और हम लोग सब काफ़ी मतलब रैशनल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, बट तो जो मैजिक मैंने महसूस किया है अपने दिल में, अपने रूबरू में, वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड दैट हैज़ जस्ट बीन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर मी। एंड मेरे हर इतने सालों में हर कार्य में, हर कर्म में देयर हैज़ बीन अ सर्टेन साइन ऑफ गॉड। आई फील लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ हमें चुनती हैं। हम अपने आप को बहुत वरना ऐसे क्रेडिट देते हैं कि ये ऑफ कोर्स हम मेहनत करते हैं, वी शो अप एवरी डे विद ऑल आवर इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क, बट समवेयर आई फील द स्टोरीज चूज अस, वी आर चोजन टू टेल अ सर्टेन स्टोरीज, एंड फिर वो कहानियाँ कहीं दुनिया में जाकर बहुत बड़े-बड़े अवार्ड जीती हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी सो फार, वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप अपनी उतार चढ़ाव के बारे में कुछ हमारे जी यंगस्टर्स को बताएंगे? बिकॉज जी, I was 22 years old when I lost both my parents, and मैं दिल्ली से हूँ, only child. I come from a very middle class family. एंड कहीं न कहीं बॉम्बे आना था, पिक्चरें बनानी थी, प्रोड्यूसर बनना था। और ऐसा कहा जाता है कि प्रोड्यूसर तो मतलब जैसे आप आप पैसे लेकर आएँगे और आपके पास या तो बहुत पैसा होगा टू बी अ प्रोड्यूसर, बट मेरे पास बस मेरी पढ़ाई थी और बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत ज़्यादा यकीन था, और आई थिंक मम्मी-पापा की ब्लेसिंग्स। एंड मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहती थी, 5 लड़कियों के साथ, ऐसे 3000 5000 रुपए देकर पर मंथ। एंड फिर धीरे-धीरे यहाँ मैंने लोगों के साथ काम किया। मेरी सबसे पहली फ़िल्म सलाम इंडिया, मैं दिल्ली से पैसे रेज़ कर कर आई थी 50 लाख रुपए अपने नेबर से, एंड मैं 21 इयर्स की थी जब मैं बॉम्बे आई थी 2006 में। एंड मैंने यहाँ पे कैफ़ेज़ में और फूड कोर्ट में, मॉल्स के मैं मीटिंग्स करती थी कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, आपके पास कोई कहानी है?
एंड उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। वो फ़िल्म तब रिलीज़ हुई 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। चिल्ड्रन क्रिकेट फ़िल्म थी, तो फिर पूरी पिक्चर खुद सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट की, स्कूल टू स्कूल दिल्ली जाकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बुक करके खुद एंड वो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन में सारे पैसे रिकवर किए अपने इन्वेस्टर के। 9 महीने लगे, फिर वापस बॉम्बे आकर एक नौकरी ले ली, रंग-रसिया किया, सही सलाम वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई में बालाजी में काम किया, एकता एंड शोभा जी के लिए। एंड फिर कहीं वहीं पर ही मुलाकात हुई अनुराग कश्यप जी से, फिर उनके साथ उनकी कंपनी में जुड़ गए और फिर वहाँ बहुत सारी पिक्चरें बनाई, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शैतान, अय्या, ताशर देश, मॉनसून शूटआउट, लंच बॉक्स, बहुत सारी फ़िल्में मुझे वहाँ बनाने का मौका मिला। और फिर अपनी कंपनी बना ली, सिक्ख्या एंटरटेनमेंट। एक्चुअली मम्मा ने ही ये नाम दिया था 2006 में, 2000 नो 2008 में मम्मा ने ही नाम दिया था ये। एंड 10 विदानियाँ एक पिक्चर से पहले, बट उसके बाद मेरा इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद प्रोड्यूस करूँ, तो मैं बाकी कंपनीज़ के लिए काम कर रही थी, चाहे वो बालाजी है, चाहे वो अनुराग कश्यप फ़िल्म्स है। और फिर मैं वापस सिक्ख्या वापस चलाने लग गई, टीम शुरू से दोबारा से जोड़ा। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2-3 बार लाइफ़ में एकदम ज़ीरो से रीस्टार्ट किया। जब मॉम-डैड की डेथ हुई तब, और फिर जब अपनी कंपनी बनाने का एक ज़रिया चालू हुआ, फिर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट किया, टीम खड़ी की, ऑफ़िस लिया। तो हाँ, ऐसे 2 बार तो हो चुका है। एंड 2017 में वापस से स्टार्ट किया था। 2013 लंच बॉक्स के बाद मसान जब हो रही थी तो बहुत डिप्रेशन था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मुझे मेरा काम नहीं आता। एक इतनी बड़ी हिट हो गई लंच बॉक्स, तो मेरे जो पीयर ग्रुप थे, मुझे ऐसा बोला गया था कि ये फ्लूक है। तो मुझे अपने आप को लगता था कि मैं फ्लूक ही हूँ, कि मतलब एक बार हो गया, बार-बार थोड़ी ना होगा। तो उस सोच से बड़ा डर लगता था और लगता था कि अच्छा मुझे तो काम नहीं आता, मैं तो कहीं काम कर रही थी तो जो सीखा सीख लिया। बट अपने आप में आने में कुछ 2-3 साल लगे और फिर वापस से 2017-18 में स्टार्ट किया और 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस हुआ। एक पिक्चर जिसमें सिक्ख्या मेरी कंपनी प्रोड्यूसर थी। सिक्ख्या का मतलब होता है कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीख से सिक्ख्या। और एंड एक साउथ तमिल में जाकर पिक्चर बनाई, सोररा रिपोर्टर, फिर पगलेट बनाई। फिर अभी हमने कटहल रिलीज़ की, उससे पहले एलिफेंट विस्परर्स ने भी ऑस्कर जीता। तो अब वापस जब मुड़कर देखती हूँ 15 साल, तो लगता है कि काम तो आता ही था, यू नो। हर एक की अपनी-अपनी जर्नी होती है रियलाइज़ेशन की, तो मेरी इस तरह से थी। Suneet, you're a Delhiite. I'm so जी, happy to know you're a Delhiite. जी, Not only is Delhi entirely proud of you, the whole country is very proud of you. जी, थैंक And यू। you are pretty young. You're right in the middle of your young age. जी, And I see a great, great future ahead of you. You थैंक यू are मैम, not only on two Oscars, you are on many Oscars. थैंक I'm यू so मैम, proud मीन्स to see. Here's my Delhiite, and you are यस, from Blue Bell School. I do not know, but I did visit your school once. Uh, uh, you mustn't be in primary. I was trying to. So proud of you that the way you've grown up in Delhi. जी, थैंक How wonderfully you've grown up in Delhi. But you जी, had a great struggle. I जी, would call you a remarkably self-made woman. जी, You are a very self-made woman. And जी, why we wanted you on the Baatcheet today, Saina and I, was that you are a very good inspiration for the teenagers coming today. जी, That how you have struggled your way through. जी, You were struggling your way through, even as a student. You were trying to sell to earn your student career. So I जी, think, please give inspiration to the teenagers to be inspired and learn lessons from you. Could you share take us जी, back to your school days, how you grew up and how you struggled your way through? You got nothing on a platter. You have जी, not got anything on a platter. On the बिल्कुल। contrary, you served now others. Guneet, go ahead. Yes, actually, I was born in GK2 in a big house. But वो उस बहुत बड़े घर में हमारा, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा सा कमरा था।
एंड अनफॉर्चुनेटली जो इमीडिएट फैमिली थी उसमें बहुत प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा था. सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. बहुत लड़ाई, बहुत यू नो प्यार नहीं था, जुड़ाव नहीं था. मैंने अपनी माँ को बहुत सफ़र होते हुए देखा. मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था, इमोशनल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था, फिज़िकल भी था. तो वो मैंने मतलब मैं शुरू से बहुत मतलब मैं सहम जाती हूँ कोई ऊँची आवाज़ में बात करता है, क्योंकि बचपन में घर में सब बहुत लड़ते थे. तो वो जॉइंट फैमिली थी, बट हमारा एक छोटा-सा कमरा था एक बहुत बड़े जीके-टू के मेन रोड के घर में. तो उससे बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो स्कूल ही था. अम और उसके बाद आई रिमेंबर एक बहुत टफ रात थी, जहाँ बहुत लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. एंड मेरे डैड ने पुलिस बुलाई थी और हमें एक्सट्रैक्ट किया गया था घर से, और हम रातों रात सूरजकुंड चले गए थे रहने, एक 5,000 घर के रेंट में फ्लैट में, जामवुड विलेज में. एंड मैं 12 साल की थी, तो मुझे वो बहुत अच्छे से याद है. बट मेरा स्कूल फिर भी ब्लूबेल्स ही रहा. एंड मेरे माँ-बाप दोनों काफ़ी अच्छे घरों से आते हैं, बट उनकी भी लाइफ में एकदम रीस्टार्ट बटन हो गया, रीसेट बटन हो गया, व्हिच आई फील इन दैट जनरेशन अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ शेम. कि आपको आपसे आपका घर ले लिया गया है, आपको निकाल दिया गया है, या जो भी अ, उन सब के बीच में किस्से चल रहे थे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, जो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है. मुझे समझ नहीं आता लोग कहाँ जाते हैं इतना प्रॉपर्टी पे लड़कर. बट जितना जितना मैंने एक्सपोज़र देखा था वो बहुत कठिन दिन थे. आई फ़ील बहुत शेम अटैच थी, इंटरनल आई फ़ील मेरे माँ-बाप की, बट उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया ये. मैं ब्लूबेल्स में अपना काम करके मैं बहुत को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करती थी पढ़ाई के बाद, और फिर मैं एलएसआर से बस लेके बदरपुर बॉर्डर जाके वहाँ से रिक्शा लेके जामवुड विलेज जाना. पहले जीके 2 में रहते थे तो कैलाश कॉलोनी पास था, फिर सूरजकुंड जाते थे, पर मेरी हिम्मत नहीं कभी टूटी. उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इंडिपेंडेंस दिया. ऐसे स्कूल में एक बारी बोला कि बच्चों का ट्रिप अमेरिका जा रहा है स्टूडेंट एक्सचेंज पे. मेरे डैड का बहुत मन था, क्योंकि मैं लौटी थी कि मैं भी जाऊँ अमेरिका एक्सप्लोर करूँ. वो बोल तो आए, बट उनके पास पैसे नहीं थे. तो फिर उन्होंने अपना जो एक कड़ा पहना था वो बेचा मुझे अमेरिका भेजने के लिए. मुझे नहीं पता था जब तक मैं बहुत बड़ी नहीं हो गई. फिर उन्होंने अपना भी बना लिया जब काम अच्छा चला, और मुझे भी एक बना के दे दिया. तो ये निकलता नहीं है. तो मुझे बस बचपन में यही था कि माँ-बाप के लिए घर बनाना है. उनको घर से बहुत लगाव था. तो फिर हमने जब मैं 16-17 साल की हुई, और मैंने तो काम करना शुरू कर दिया था. स्कूल के बाद कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही काम करना शुरू कर दिया था. तो चाहे वो 400 रुपीज़ पर आवर पे सेल्स गर्ल बन के मैं लाफिंग काउ चीज़ बेचती थी दिल्ली में सड़कों में टेंट लगा के. ऐसे वॉलंटियर काम करती थी. फिर मैं डीजे बन गई, इंश्योरेंस एजेंट बन गई. जहाँ पर भी मतलब हसल कर पाऊँ. पापा ने मेरी दिल्ली नोएडा टी सीरीज़ में थोड़ी नौकरी लगवाने की भी कोशिश की. मैं रात को गौहर रज़ा और शबनम हाशमी के पास अनहद एनजीओ में डॉक्यूमेंट्रीज़ एडिट कर रही थी. तो मुझे जहाँ-जहाँ मौका मिलता था, मैं अनुरीटा सहगल जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदर हैं, उनको असिस्ट करती थी. वो इंटरनेशनल फ़िल्म्स में थी. तो बहुत हासिल किया. मेरे दोस्त पोस्ट प्रोडक्शन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए. मेरी तो ना हिम्मत थी और ना इरादे, मुझे बस घर खरीदना था. मैंने बहुत एड्स में काम किया, बहुत एड्स लाइन प्रोड्यूस की. मैं हमेशा ज़्यादा काम अपनी प्लेट पर ले लेती थी, क्योंकि मुझे घर बनाना था अपने माँ-बाप के लिए. फिर हम लोग कैलाश कॉलोनी रेंट पर आए, जहाँ मैं अपने इन्वेस्टर से भी मिली, सलाम इंडिया के. एंड वहाँ पर उनका बहुत जुड़ाव हो गया जीके 1 पहाड़ी वाले गुरुद्वारे से. तो उनका बहुत मन था कि वो जीके 1 पहाड़ी वाले गुरुद्वारे के सामने घर लें. और जब मैं 22 साल की थी तो हमने घर ले लिया. बहुत मेहनत की पापा और मैंने, और हमने अपनी मम्मा के लिए जैसा उनको घर चाहिए था, कॉर्नर, 3 तरफ पार्किंग, एक पार्क फेसिंग गुरुद्वारे के पास, 3 बेडरूम, जैसी-जैसी उनकी डिस्क्रिप्शंस थी. तो वो घर तो ले लिया, लेकिन वो घर बन रहा था, उसको बनने में 1 डेढ़ साल लगा. तब तक दोनों चल बसे. मम्मा को कैंसर हुआ थ्रोट का, वो रिलैप्स हुआ. तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी सप्रेस्ड इमोशंस के साथ जी रही थी,
जितना मैं उन्हें समझ पाई। कहीं न कहीं जब हम अपना टीनेज जी रहे होते हैं, तो हम भी बहुत बिज़ी होते हैं टीनेजर्स बनने में, सो आप इतना समझ पाते हो अपने माँ-बाप को एज़ यू ग्रो ओल्डर, एज़ यू लिव मोर लाइफ एंड यू मीट मोर पीपल। सो या आई फील they left very early. They were my best friends. They gave me all the wings. And या एंड हाँ, तो फिर वो जो बिल्डर था उन्होंने भी मुझे बहुत सताया मम्मा-पापा के जाने के बाद, क्योंकि जो भी उन्होंने पैसे उन्हें दिए हुए थे, फिर ओवरनाइट बहुत पैसे रेज़ करने पड़े वो घर अपने नाम पे करने के लिए, उनके जाने के बाद। फिर मैं सब बेच-बाच के दिल्ली छोड़कर बॉम्बे आ गई। मेरा तो ऐसा कोई मन नहीं था दिल्ली वापस आने का, क्योंकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से निकली थी। बहुत टर्मॉइल और ट्रॉमा से, हर किस्म का, कि बहुत स्पेशली प्रॉपर्टी, आई फ़ील लाइक लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है प्रॉपर्टी से। सो बट कहीं न कहीं अपना रास्ता, अपना ज़रिया यहाँ बनाने आ गई। बस मेरी परवरिश और मेरे माँ-बाप का परवरिश और स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज का मास कम्युनिकेशन जितना सीखा था, बट आई फ़ील सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉमन सेंस, मोर देन एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ गुड। और मेरे स्कूल ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बनाया। मैं प्रीफेक्ट थी, मैं डिबेट्स में पार्ट लेती थी, मैं बहुत आउटगोइंग शुरू से बात करने में। तो उससे मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी कि मैं किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस आया। आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड एक बेसिक कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, और एक मेहनत करने की इच्छा, वो बहुत ज़रूरी है। एंड फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फिर तो उसके बाद तो ये है कि हम ही अपने सपनों को शॉर्ट चेंज करते रहते हैं। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत करें। तो आज मेरे पास मेरी मेरी एक टीम है, मेरे 2 ऑफ़िसेज़ हैं, 50 लोग साथ में काम करते हैं जुड़े हुए। एंड जो ज़िंदगी मैंने यहाँ बना पाई हूँ मैं, आई पिंच माई सेल्फ समटाइम्स दैट गॉड हैज़ बीन रियली सपोर्टिव, एंड माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। एंड आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ऑस्कर मिला, देश का पहला ऑस्कर। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज़ गोइंग बैक टू द रूट्स। एंड जैसे-जैसे स्पिरिचुअल जर्नी और बढ़ी, मोर इन 30s, क्योंकि माँ-बाप के जाने के बाद तो सिर्फ़ काम किया। मैंने सारा ग्रीफ़ अपना काम में चैनलाइज़ किया। फिर 7-8 साल के बाद वो हिट हुआ कि एकदम अकेले हैं लाइफ़ में, एंड काम में भी बहुत चैलेंजेज़ हैं, बहुत जजमेंट होता है, बहुत कॉम्पिटिशन है। वो कहीं न कहीं इट एड्स अप, इट कैचेज़ ऑन टू यू एंड योर थॉट प्रोसेस। चाहे वो वर्क पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपको हर मिनट अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कभी-कभी मुझे लगता था मेरे माँ-बाप होते तो शायद सबको पता होता कि मैं कहाँ से आती हूँ, मेरी सोच क्या है। एज़ अ प्रोड्यूसर आप बहुत जज होते हो, मतलब मैं हुई थी। अ, मतलब वो सब था कि यंग बहुत थी, 26 साल की थी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाया। तो ऐसे बाल व्हाइट कलर करके मैं प्रे करती थी कि चश्मे लग जाएँ, सफ़ेद बाल हो जाएँ, थोड़ा ऐसे वेट गेन हो जाए, मतलब मैं 40 साल की लगूँ, जो मैं इस साल होंगी नवंबर में। बट मैं तब बहुत प्राइड फ़ील करती थी 26 साल की उम्र में कि मैं ऐसे 40 साल की थी, जिस लोग मुझे सीरियसली लें। तो आप जैसे जिस जिस भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, एज वाइज़, मॉनेटरी वाइज़, आप उसको अपने आप किस तरह से इंटरनलाइज़ करते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, वो केस पर केस, डे टू डे सिनेरियो, जस्ट टू कीप मूविंग द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। काम होना चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जब मैं अनुराग कश्यप सर के साथ काम कर रही थी, तब उन्होंने बोला कि हमारी फ़िल्में इंटरनेशनल जानी चाहिए, तो फिर मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा यही था कि हमारी इंडियन फ़िल्म्स इंटरनेशनल जानी चाहिए, जो चाहे उसके लिए जो हो। तो 30-30, 40-40 घंटे की फ्लाइट्स लेकर, लोगों से सबसे फेस्टिवल से 1 महीना पहले उनसे मिलकर, उनको अपनी पिक्चरों के बारे में बताना, उनको हमारी पिक्चरें बेचना, दिखाना, ऐसा बहुत हासिल किया, मतलब ऑलमोस्ट like a school project, but nothing, I didn't judge it, I think हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्रीली अगर आप किसी से माँगो, तो वो उनकी चॉइस है, वो आपको मना कर दें, बट एटलीस्ट आप माँग तो सकते हो ना, एटलीस्ट अ, आपने तो अपने यूनिवर्स को मौका दे दिया ना कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे। तो बस ऐसी एक जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी फ़िल्म्स को इंटरनेशनल लेके जाने की।
मैं बहुत सारी फ़िल्म्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स में लेकर गई। चाहे वो मानसून शूट आउट है, चाहे वो लंच बॉक्स है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पेडलर्स एंड बहुत सीखा। मुझे इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिला। अम, मैं ऐसे स्क्रिप्ट लैब्स एंड को-प्रोडक्शन लैब्स में मैंने जाके को-प्रोडक्शन ट्रीटीज़ के बारे में सीखा, जिससे मैं लंच बॉक्स बना पाई, जो इंडिया की पहली इंडो-फ्रेंच को-प्रोडक्शन है। जो 1985 में हमने ट्रीटी साइन की थी इंडिया और फ्रांस के साथ, लेकिन मैंने पहली बार यूज़ की 2011 में। उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो ये कहीं न कहीं प्रोड्यूसिंग मेरा पैशन बन गया। तो मैंने सबसे पहले क्राउड फंडिंग किया था एक पिक्चर पेडलर्स और हरामखोर के लिए फेसबुक से। उस टाइम क्राउड फंडिंग वाले भी वेबसाइट्स नहीं थी। बट आई जस्ट फील लाइक जो भी जो करना है उसके लिए ज़रिया बन जाता है, बट उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए कि मतलब जिससे भी माँगना है, जिससे भी पूछना है। 2010 में मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म मैंने एक अमेरिकन बच्चा यहाँ पर आया था, मैंने उनकी मदद की थी, उनकी पिक्चर प्रोड्यूस की थी कवि करके। उनकी डिप्लोमा फ़िल्म एंड वो भी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। तो 2010 में मुझे माँ-बाप 2008 और 9 में चले गए, 6 महीने के गैप में। तो 2010 में बिल्कुल पैसे नहीं थे एंड मैं नौकरी कर रही थी बालाजी में, और मुझे ये खबर मिली कि पिक्चर अमेरिका में ऑस्कर में नॉमिनेट हो गई। तो मेरा बहुत मन था कि मैं अटेंड करूँ, तो मैं रोज़ ऐसे ईमेल्स लिखती थी बहुत सारे अमीर लोगों को कि मेरा टिकट, आई एम द प्राइड ऑफ इंडिया, आप मेरा टिकट दे पाएँगे, आप मेरा स्टे दे पाएँगे, आप मुझे वीज़ा में मदद कर पाएँगे? तो मुझे कहीं से जवाब नहीं आता था, बट मैं लिखती थी बहुत लोगों को ईमेल्स। एंड फिर ऐसे करते-करते एक दिन मैंने पता नहीं ऐसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा पाटिल को लिखा, वहाँ से जवाब आया राष्ट्रपति भवन से, वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैं और मिनिस्टर्स से मिली, सर पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मुझे और लोगों से इंट्रोड्यूस किया, वीज़ा, पासपोर्ट, सब चीज़ें अलाइन कर कर हमें एयर इंडिया की टिकट्स देकर अमेरिका भेजा। मेरा आर्टिकल एक आया कि पिक्चर तो नॉमिनेट हो गई बट पैसा नहीं है जाने के लिए, तो कॉक्स एंड किंग्स का सामने से फ़ोन आया जर्नलिस्ट को, उन्होंने स्टे दिया। तो आई फ़ील लाइक अगर हिम्मत है तो रास्ते बन जाते हैं। और इरादे बुलंद होने चाहिए, और कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी से मुझे लगता है कि अब तो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे मेरी एनर्जी और डिवाइन से बात कर कर जो मिलता है उसमें मैं बहुत शुकराना, बहुत ज़्यादा आई फ़ील वेरी, वेरी ग्रेटफुल। आई नाउ फ़ील लाइक कि किसी भी बात के लिए वन कैन नॉट रियली आस्क ह्यूमन्स, it's actually all the energy which is the ultimate giver of joy, of peace, of health, of happiness, of success, of luck, of you know तो जितना ज़्यादा जर्नी आगे बढ़ी, जितनी मुश्किलें आई, मुझे पापा ने जब 18 साल की थी तो वो करवा दिया था ऋतुनंदा स्कूल से इंश्योरेंस। तो मैं टाटा एआईजी की इंश्योरेंस एजेंट बन गई। तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि 10 लोग आपको मना करेंगे और 1 जना हाँ बोलेगा। तो कहीं न मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे हर नो को ना सेलिब्रेट करना है। तो मैं हर रिजेक्शन को सेलिब्रेट करने लगी, क्योंकि मुझे लगा 11वां तो यस है। पहले 10 लोग फटाफट नो तो बोले। तो जभी भी मैं अपना किसी, बिकॉज़ मैंने हर प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअली पैसे रेज़ किए हैं। नए-नए लोगों के पास जाकर, नए रास्ते खोलकर, चाहे वो स्टूडियो है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं। तो मैं जब भी एक प्रोजेक्ट बाहर लेके जाती हूँ, तो मैं सामने से कहती हूँ, "नो मुझे फटाफट बोल दो।" जैसे ही आप नो बोलोगे ना, तो हाँ बोलने वाला आ जाएगा ना। तो चाहे ये फ़ॉर्मूला मैंने अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ किया है कि ना नहीं है तो जल्दी बोल दो, समय मत बर्बाद करो, सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप ट्राइंग। सो ऐसे कुछ असूल बन गए ज़िंदगी में एंड गाड़ी चलती चली गई एंड कहीं न कहीं आई फ़ील क्लोज़र टू माय पेरेंट्स, आई फ़ील क्लोज़र टू माय गुरु, आई फ़ील वेरी ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस दिस क्लोज़नेस विद देम। बिकॉज़ ये भी एक एक्सपीरियंस है जो बयान करना और एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत ही इंटरनल प्रोसेस है। Saina, you got something Guneet, to you. what I really admire about you. I'm sorry, my inverter is going to make this noise, but the electricity can go at any point. What I really admire about you is
a very beautiful thing you said, that every business deal is a responsibility for you. Yeah, Money is responsibility for you. that's And right. Absolutely. I think a producer is the nurturer and a nourisher of the film. जी, So you are the nurturer and nourisher of the film. So जी। let's talk about that. या आई थिंक बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत आई थिंक शौक रहा है और कहीं न कहीं जब कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा होता तो मैं ही कर देती हूँ कि अच्छा हाँ, हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के डीप एंड में कूदने की तो बचपन से ही आदत थी, तो इनिशिएटिव लेने की बहुत आदत थी। कि हाँ, मैं कर लूँगी, हम देख लेंगे, यू नो। व्हेन यू जंप यू लर्न टू स्विम आल्सो और व्हेन यू जंप यू नो यू डोंट फॉल, यू लर्न टू फ्लाई। तो कहीं न कहीं I think because of mom and dad, had to grow up, had to take responsibility in at every level, Yeah, for myself, for my life, and also they taught me, they prepared me, you know, for a life. तो कहीं न कहीं even if I was very young, I used to always be in the room and I was like हाँ मैं कर लूँगी, यू नो। सो कभी-कभी ओवर कमिट भी किया, बहुत जूते भी पड़े, बट सीख भी लिया, यू नो। ओवर कमिटमेंट का बर्डन एंड डिलीवरी का जॉय। तो येस, एवरीथिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट जो हम पिक्चरें बनाते हैं, जो मेरा मेरा सोच तो हमेशा ये रहता है कि किसी के डेढ़ 2 घंटे भी ग्रांटेड नहीं लेती मैं, क्योंकि अगर आप हमारी कहानी आके देख रहे हैं, अपने 2 घंटे का समय ले रहे हैं, दे रहे हैं हमें, वो वन वे कम्युनिकेशन है, तो आई फील लाइक वो भी क्यों ग्रांटेड लो? कुछ यू नो कुछ ऐसा दिखाओ कि लोग सोचें इसके बारे में एंड थोड़ी ज़िंदगी और खूबसूरत हो, थोड़ा कुछ और एक्सपीरियंस हो एक। सो वो कहीं न कहीं सोच में हमेशा रहता है। सो या आई थिंक the the jazba of taking responsibility has always been there, and I have always, जब भी मैं बहुत young भी थी, मुझे कहा जाता था you feel like a mother, you're a mother on the set, you know। I'm always taking care, I'm always asking people for food, for, you know, did you eat, did you, you know, there are more important things, like everybody knows their work. We work with professionals, you know, they are doing their job, but I think the little things go a long way, एंड वो लिटिल थिंग्स लोगों को याद रहती हैं। तो उसमें मुझे बहुत जॉय मिलता है, मतलब वो पर्सनैलिटी है। वो इसी सोच से नहीं होता कि किसी से कुछ मिलेगा, वो बस इसलिए होता है कि किसी की थोड़ा और आसान बना दो, यू नो। सो या you've always been you've always been taking charge of your life. Always यस, be in charge. By and यस, large, always be in charge. There was a great streak of conscientiousness in all that you've shared, isn't it? यस, Did you feel that way? You यस, are always taking charge. यस। पहले माँ-बाप के जाने के बाद तो सपने मेरे जो जिन जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी, तो उनके सपने मेरे सपने थे, क्योंकि मेरे कोई नए सपने नहीं थे। घर बनाना था, बना लिया, बेच के सब यहाँ आ गए। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, यू नो, लाइक आप इन सब चीज़ों से बहुत परे हो गई थी मैं। तो मुझे था कि जिन भी लोगों के साथ मैं हूँ, अगर मैं उनका उनकी पिक्चरें, उनके जो भी सपने हैं, वो मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, बिकॉज़ यू नो आई डिडन्ट कम विद मनी, बट आई केम विद एनर्जी। यू नो, तो Yes. मेरे पास ऑफ़र करने के लिए बस मेरा इंटेंशन और एनर्जी है, और तो कभी कुछ था नहीं। पैसे तो मैं रेज़ करूँगी, यू नो, बहुत बार रेज़ होंगे, कुछ बार रेज़ नहीं होंगे, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, बट दैट इज़ द जर्नी दैट यू लर्न। बट एज़ अ यंग प्रोफेशनल, यू नो, यू आर वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ जब चीज़ें अच्छी नहीं होती, एंड जब चीज़ें अच्छी होती हैं, यू आर ऑल्सो वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब यू आर जस्ट लाइक, "सी, आई पुल्ड इट ऑफ," यू नो। सो, आई थिंक एज़ आई हैव ग्रोन अप, आई हैव now learned to be okay in both the aspects, you know, staying in a state of शुक्राना now, कि ये भी आप ही ने दिया है, तो इससे आप ही तारो, आप ही निकालोगे, या you know कोई दिक्कत भी आती है, but initially those emotions used to be very extreme, of ultimate joy, of ultimate sadness, of you know, losing friends or gaining friends, but over a period of time, the spiritual side has really opened up my universe, and now I feel like, you know, I live in a world of chosen family, so I derive a lot of peace out of the family I've chosen around me rather than the family I was born in. Sana, you have something to share. Talking about family, Yeah. Yeah. let's show you. Let's
invite somebody Sure, who is your Sheet co-host. yes, anchor. Your sheet anchor. sure. Let's invite somebody who's your co. Yeah. Oh, my husband. Oh God, lovely indeed. Indeed. Hello, hi. So happy to see Hi. you, Sunny. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Can you hear me? Thank you. Thank you, Sound Dr. audible. Julia. Sunny, हमने very, सोचा very सनी good. नहीं आएगा. हमने सोचा था सनी नहीं आएगा. So sorry. I am out with my mother. It's my mother's birthday today, and I had promised her that I will take her Our out. mother's We are birthday. out in the salon. We are out in the salon. We are getting some treatments for my mom. So हमने सोचा सनी मैराथन पे होगा, भाग रहा होगा कहीं. नहीं नहीं, अब तो नहीं, कहाँ अभी भाग अभी गया. जब से गुनीत का हाथ पकड़ा है, तब से भागना कम हो गया. But definitely So travel. Sunny But is in so Chandni good to Chowk. see So Sunny, you are in you. Yes, Chandni Chowk. How nice. तो वहां पे खास आसपास की जलेबियां और वो पठाइयां खाते रहते हो? डेफिनेटली मैम. आसपास की बहुत सारी जलेबियां हैं, कचौरियां हैं, मिठाइयां हैं. वो खाने के नटराज साथ की साथ बैलेंस जलेबी. करने के लिए भागना भागना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए वो बैलेंस हो पाती है. अदरवाइज मैं शायद फ्रेम में डबल दिख रहा होता, तो भागना बैलेंस कर देता है. And are you feeding Guneet lots of sweets from Chandni Chowk, or you saying no, no, count your calories? दोनों तिवारी के लड्डू, नटराज की दही बल्ले. अभी 6 महीने हुए हैं शादी के लिए, तो अभी तो सब बहुत नया है. शायद 6 हो गए या 5 5 6 महीने. आप बात करेंगे जो मिठास आप दोनों ने एक दूसरे के जीवन में दी है. लेट्स टॉक अबाउट दैट मिठास. Okay, lovely. Yeah, I feel like बहुत stability, बहुत stability of a home, stability of parents. I feel like Sunny is my centering, and the whole family. उड़ तो मैं रही थी, but I think the he's the much needed wind and the grounding. So the now I think like we fly higher and stronger, and together, and I feel it's so beautiful to be able to celebrate the joy of an Oscar also with the family, because um, मैंने बहुत सारे अपनी पिक्चरों के प्रीमियर किए, बट कुछ भी अल्टीमेट जॉय वैसा फील नहीं होता था, बिकॉज आपको आपके माँ बाप से चाहिए होता है कि आपने अच्छा काम किया, Yeah. उन्हीं आंखों से प्यार चाहिए होता है. तो बट नाउ आई हैव दैट with Sunny, and with mom and dad and the family. So I'm just so grateful. Like, this is out of my dreams, and this is what I always wanted, and I prayed for. मैंने बहुत साल प्रे किया है. बहुत बहुत यूनिवर्स से बहुत प्रे किया. So they've given you your love. I Yes. truly believe, yes, I truly believe marriage is two journeys coming together is one journey. So, Sunny, how do you feel your journey blending with Guneet's journey and Guneet's journey blending with your journey? I think it is totally out of a dream. The journey that we started together, I could never have envisioned somebody, joining the family and blending in so well and bringing in so much love to the family, to me, and sharing everything. I mean, this somehow happened that right from day one, the way we met, we could be so candid and so open to each other and share everything without any hesitation. And that is all because of the kind of love that she has to give. And when she says she has a huge chosen family, I think that is because she has a lot of love to give. And when she gives the love to people, that reciprocation of love is always there. And I actually feel blessed that so much love she gives me. I could have never envisioned something like this. And going forward, I mean, this is something that she's brought into my life. Gratitude is something that I always used to be very humble, but I think that sense of gratitude and that sense of bowing down to a higher power and taking strength from that is something that she's brought in my life, and that is very liberating, and that is I think the biggest thing that could have happened to me. Yeah, we are together achieving milestones in terms of love for each other, in terms of love in the family. It's a blessing. Blessed to be
You know, pehle, it's so nice to hear that, because pehle relationships mein, because I've always been, somebody who's given a lot of love. I cherish relationships, friendships, I cherish them a lot. So पहले relationships में मुझे ऐसे सुनने को मिलता था कि you are too much, you are just, everything is too much. तो मुझे उसके लिए भी बुरा लगता था, उसका भी गिल्ट था कि हाउ टू बी लेस, हाउ टू डू एनीथिंग लेस. ऐसी हूँ मैं, फुल पैकेज, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. So it's just so nice, when somebody appreciates that and doesn't look at it as a burden. So I'm grateful for every little thing, because बहुत सारी दुनिया बहुत रेडी होती है आपको नाम देने के लिए. You are too much, you're too Punjabi, you're too loud, you're this, you're that. Here, it's beautiful when you meet a partner who finds beauty in all of that. You know, Mhm. and who has the, who's so secure that they can take the love, and receive the love, and have, and be able to give back and reciprocate. So उसके लिए खुद की सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है. वो मुझे बहुत थेरेपी के बाद पता चला, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था मेरे में ही कमी है. आपका जो दिल है जो प्यार से भरा हुआ है, आप दोनों का प्यार, माँ ब्लेस दिस बॉन्ड, गुरुजी ब्लेस दिस बॉन्ड. बट लेट्स शो यू योर that sacred space of your heart. That's a little surprise. Let's show you your sacred space of your heart. मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन जब रहमत होती है तो फिर वो तो पता चल ही जाता है कि उनकी कृपा है और उनका हाथ जुड़ा हुआ है. गुरुजी has taught us to have a better response of gratitude, of shukrana in every situation, and that has elevated every process. मतलब जो है वो surrender ही है. फिर yes, Share your So yes, heart. Share your heart with us. आई फील लाइक मेहनत सब करते हैं, लेकिन जब रहमत होती है तो मेहनत पे चार चांद लग जाते हैं. तो ये सब रहमत है. हम उनकी रहमत में ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, एंड बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं. And I feel after parents, I just wanted to feel protected. So when I look at Guruji, I just feel my thing is that अच्छा, I'm fine. क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीस चला गया था बहुत साल. So I just feel like वो है तो सब अच्छा है. So that gave me my, it's like my own trampoline to jump off. So my own joy, and something that I can always fall back on. So for me, that has been the strength that the practice that Guruji has given me, and also connected me back to my roots. मैं दिल्ली में हर सैटरडे सीसगंज साहब जाती थी, एंड हर संडे बंगला साहब जाती थी. हमारे बचपन में मेरे माँ बाप, that was my Saturday and Sunday, every Saturday, Sunday, every New Year in Bangla Sahib. And it was my joy. It gave me a lot of joy and a lot of centering. उस टाइम नहीं समझ आता था, बट मुझे बचपन से बहुत मजा आता था. मेरे दोस्तों का भी बर्थडे होता था तो मैं उनको बोलती थी बंगला साहब चलो सेवा करेंगे और लंगर करेंगे. तो वो सब बॉम्बे में ना अलग अलग हो गया था. मतलब बॉम्बे में वैसा कल्चर नहीं बना. तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे 10 साल बहुत दूर चली गई थी अपने रूट्स से. एंड समवेयर विद गुरुजी, गुरबानी समझ आने लग गई. बैठना आ गया, मेडिटेशन समझ आ गया. एंड also in 30s, also in after a certain experience of life, with so many experiences, तो कहीं ना कहीं गुरुजी थेरेपिस्ट भी बन गए. uh, and जी. satsang is a whole family. When you जी. get into a satsang, sangat, the जी. sangat is your family, is spiritual family. जी, वो Did कहते हैं you get संगत. yeah, that you sangat? Carry on. Sangat Ai Guru Aya. So I have a beautiful, beautiful Sangat family, not only in Bombay, but in Delhi and all over the world, in LA, in New York, in just wherever I travel. It's like treated like a princess everywhere. And Sangat is just like, हम आपको एयरपोर्ट लेने आ जाते हैं, हमारे घर पे रह जाओ. और उतना unconditional प्यार, just because you feel like you're home, you're always home. Yeah. That's right. That's what sangat is for, and that's Yes. what Guru One thing does. I would like to add, one thing I Yes, would like Anil. to add here is that with Guneet, Guruji has come into my life with Guneet, and
the most powerful feeling that I have by being in my life is that I've started living the life as a toddler. So as a toddler, अगर आपके पास momentarily कुछ आपकी लाइफ में if something wrong happens, you don't worry about it. You think that your parents will take care of it. And same way with Guruji being in my life, I feel if there's something wrong happens today, I trust that this will be all right. This is only momentary, and somebody up there, my guiding force, will take care of it. And if there's something right happening, then you start feeling that you deserve it because toddlers don't question when something good is given to them; they just accept it. So that acceptance, so in both good times and bad times, this feeling I think gives me a lot of power, a lot of sense of grounding, and that's the best feeling about it. It's like a divine father. It's like divine parenting. You get a Yes. divine father who is with you always in spirit. Yes. And Guruji is known for all these miracles. Yes, all the time. I've had an occasion to my very good friend Achal Paul, who actually introduced me to Guruji. I attended a few of his satsangs. You really feel, you really feel that you are protected in a way. You feel protected. You can speak to him. I think you did. I heard somewhere you used to converse with him. कि गुरुजी मेरा ऑस्कर कहाँ है? यस आई यूज्ड टू आई मेरे पास $5 के दो मैंने हॉलीवुड बुलेवार्ड से दो ऑस्कर लिए हुए थे एंड गुरुजी के सामने रखे हुए हैं और मैं उनको कहती रहती इनका तो रंग भी फिट रहा है असली वाले कब आएंगे तो मैं तो रोज सुबह कान खा चुकी हूँ मैं उनका और अभी मुझे पता है कि एक I think some network connectivity issues. Yeah, we we pray that internet comes back. Guneet's internet has gone frozen. Yes, yes. Guneet sir. Sunny, did you meet Acha. Guneet in the Sangha? No, I didn't meet Guneet in the Sangat. I met her somewhere else, but then she introduced me to Guruji. So yeah, I've become Sangat after. Met her where did you say? I missed the word. We we met online on a dating app. We didn't met online. अच्छा. So you सॉरी met Guruji इंटरनेट ही later. चली गया हाँ चला गया वापस आ गया. तो Today मैंने is a पता है kind of मैंने a पता tough है day because even I'm struggling here with the light and you're struggling there with the internet. But जो उनकी रजा हम ना आपको मिलवाते हैं पहले आपके गुरु परिवार से somebody अरे who वाह knows you very closely and exactly. यस your गुरु परिवार जी. Hi, Guneet. अनीता आंटी How are you, हेलो darling? Hi, good to see you. It's wonderful to be here. Thank you, यस Ji, everyone. Yes, थैंक्स फॉर so कमिंग beautiful. या इन्होंने तो Thank you मुझे for So your good to being. have you. बातें करना सिखाया Yeah. गुड मॉर्निंग बोलो गुड नाइट बोलो गुरुजी से प्यार करना बात करना उनसे प्यार लेना मुझे सब अनीता आंटी ने ही सिखाया आई कॉल हर माय गॉड मदर Yes. We were told so that you're very good. Anita, did you introduce Guneet to Guruji? No, but Guneet had invited me to a satsang in Bombay several years ago, and that's how I met her. Her अच्छा. invitation, it was very pure, very straightforward. I wanted to come for my satsang. It's as pure as her faith, I would say. If I may just take a few minutes to describe her faith, which really inspires me. Besides her being overall an incredibly inspiring human being, I think her faith is very inspiring because she's a very direct, childlike, and that she innocence. Like Guruji, Oscar Dilado, बड़ी शिद्दत से काम किया है. Things like that. I mean, she's just so direct and so childlike. It's like a father saying a daughter saying to a father, not asking, but just saying literally, Dad, I want candy. So this is the way she approaches Guruji with such simplicity.
and honesty and integrity, I would say. I mean, I learned from her. I know she's saying that maine aapse seekha. We learn from each other. I think with Guruji, the beauty is with Sangat and Guru Parivar, that we're all mentoring each other and we're all walking each other home. So with Guneet, her simplicity, integrity, innocence, childlike connectivity. कि Guruji मैंने Oscar दे दो, you know, and yet that I would say that unflagging resolve in whatever she wants and that hard work and effort. So she, she kind of balances her act of faith kind of thing. Yeah. How So yeah, wonderful. yeah, yeah. So To it's have, and we've got another Guru Bhai and Achal Paul. Achal Paul is also my Guru Yes. brother. Oh my God. No, no. Yeah, Guruji, yes. everyone. I think it is Guru Parivar which is here. And so nice to see everyone on the same platform. And Guneet, tremendous what you call inspiration one has got. I'd been listening to how you shared your satsang here. I would call it a satsang. You It know is. It is how indeed. how the Like, journey started. It's all his blessings. yeah, And trust me, I, you your know, total surrender is what in turn gave got you what you actually were dreaming or just asking Guruji to be. It's all total surrender. In Guruji always used to say, don't do any ifs and buts. Just surrender and don't have to worry. Things will fall in place automatically. yeah, And and that's in this journey, you meet some of the most beautiful people, like Chef Vikas Khanna, who was on the last chat also with you. Yes, yes. And it is amazing. I met him through this journey, and he became a very strong pillar for us, even at the Oscar campaign. So मतलब वो कहाँ रास्ते खोलते हैं, कहाँ रास्ते जोड़ते हैं, वो हमें नहीं समझ आता, बट वो भेज देते हैं अपने लोग, to support you. जैसे तुमको गुनीत हम ढूंढ रहे थे तो अचल पॉल आ गया. yes, yes, yes. And trust me, I was invited, and thanks to Anita, I was invited to how Guruji formulates a chain. She Yes, invited me yes. to Guneet's satsang. कहते हैं सेवा करनी है. मैंने कहा okay जी. Jai Guruji. Always a pleasure. So I reached there, and suddenly this thought came after I had seen the last program of Chef Vikas Khanna, because she shared her satsang. I said, oh my God, this she is the, I would say, the automatically the next guest for Baatcheet. That's how it all started. And she was Yes. very gracious. I took her aside. Instantly, she said, yes, I'm okay. I'm good to go on this. Come on this program. I said, Course. okay. Yeah, Wonderful. yeah, very. It was just a brief talk of, I think, a good less than 5 minutes. We were in that room. I just said and shared one JPEG of the earlier thing. She said, yes. So then it No, all no, of started. course. Thank you. It's an honor, and thank you for working so hard, bringing part of my family and my heart here, putting in EV. So it's so sweet. Thank you. Really an honor. Guneet, we pray for you that you continue to succeed in all your efforts, because Thank you, Guruji is ma'am. there to take care of you. Guruji is Yes, there to take care of you. Yes. The best yes, part is while you're surrendering, you're giving every bit of yourself to the work. And now yes, that you are doubly with Sunny with you, so it's Guneet and Sunny, it's double, 200%, yes, isn't it? And with Absolutely. 200%, and with Guruji, now it's 300%. So yes. Oscar so और आने ही आने. बिल्कुल आए. yes, yes, They're on their way. yes. Guru Parivar like Anita Kumar, who has always been very strong pillar for anyone and everyone she meets. You Yes. know, Thank you. Thank you. Yes. That's what the Thank guru you. does. Brings expands the family and tells Yes. you you have so many through me, through Guruji. Dekho main haan na, another through. I'm with you Yes. through them. That's what he Yes. does. Gu- absolutely. Guneet, faith also means another thing. When things are not, when challenges come, you kind of feel you're in the middle of something. You don't give up. Guneet has never given up. Yeah, giving up is not a choice when you feel eternally responsible. You keep pursuing and you keep looking for um, a corner, and then
वही ना जो 10 बार मना करके एक बार हाँ बोलते हैं, you keep trying and you keep at it and then somewhere help comes, you know. It's मतलब वो तो दुनिया I का दस्तूर है। I heard you say, Guneet, at your Oscars, कि मेरी बारी भी अब और अभी मेरी speech pending है. What is that हाँ speech which you did not give because 45 seconds खत्म हो गए थे? हाँ, मतलब वो थोड़ा स्ट्रेंज था, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा ना एक और स्पीच देने के लिए, एक और ऑस्कर सीज़न Exactly, का। और exactly. मैं वापस जाकर अपनी स्पीच दूँगी तसल्ली से अपने माँ-बाप और अपने गुरु को और अपनी शिक्षा ब्यूटीफुल टीम को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, फ़िल्म मेकर्स को एंड सबको आराम से थैंक यू बोल पाऊँगी। स्टूडियो को जो मतलब पूरा एक कारवां लगता है फ़िल्म बनाने में, चाहे जो फ़िल्म के किरदार हैं, चाहे वो फ़िल्म के पीछे जिन्होंने उस पे फ़ेथ दिखाया। So it's a huge list of thank yous and also a message to the world that if you dream, you can make it happen. It's it's not impossible. Nothing is impossible. ये इंडिया का पहला ऑस्कर है for an Indian production, and I feel we all just got started. And we're all waiting for that speech of yours, which is in your pocket still, in your pocket Yes, still, which you have yet to deliver. When you get your 45 seconds. yes, we will very soon. So, Saina, can we thank all of them? And say, because we crossed our limit of time, we let them. Yes. We're just reaching our time. We're just reaching our time. But thank you. Guneet, the last word about what Indian cinema means to you before we close. What does Indian cinema mean to you? For me, Indian cinema is my lifeline. It is my passion. It is my work that I enjoy. It is my karam bhumi here. And I feel like Indian cinema needs to be appreciated and seen around the world. More and more brown stories. हम एक काफ़ी खूबसूरत देश हैं जिसमें इतनी सारी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी। तो वी आर वेरी रिच इन आवर कल्चर, इन आवर कंटेंट, and I feel with all the education that we can share with each other, we just got started. But for me, Indian cinema is my lifeline and my passion and my life's mission to continue to put it on the world map. Wonderful. On that note, I Sure. think we can take leave. Say Jai Guruji to Thank all of you. you. Thank you, Jai And Guruji. thank you. We Thank meet you next month. Thank Thank you, you to Guneet. everyone. Thank you, Thank you for Sunny. having me. Thank Thank you. you, Achal, and Thank you Thank thank you, you, very everyone. much. everyone. Thank you. Thank you, so much. everyone, Thank for Thank you making you. to Thank our you time. for sparing audience. your very precious जी time. जी you. थैंक यू टू आवर ऑडियंस मिलेंगे आपको अगले महीने जय Thank you so धारी much. माँ तब तक और व्हाट्स इनसाइड यू मैटर्स व्हाट्स इनसाइड यू मैटर्स Inside her, मिलेंगे in आपको her was to go on, and she'll go on. She's only reached halfway. She's got to go right to the top many times over. Guneet, you will go many times over Thank you, ma'am. I hope she with so. Sunny on your side. And she's just Guruji over there. started Thank she's you. just started Yeah. and what's inside So, you matters it matters the most what's inside you जी जी thank you. Thank you. thank you everyone thank you जी Thank जय you. Thank you. जय धारी Thank you, everyone.